Hello, my dear students. Once more, I am with you with a new topic, that is future simple tense. And I welcome you all in my YouTube channel, English Classes with Shashi Singh. As you may see, on the daily basis, we discuss about the trick that we use to fill the correct form of the verb. So, today's trick is related to the future simple tense. How to fill the correct form of verb related to future simple tense. We are going to know this trick. So, the trick is that words like next week, next month, next year, I think, I guess, probably, perhaps, I hope, I expect, I believe, etc. It means that whenever such words are used in a sentence, when you see such words are using there in a sentence, then what we do, we only use the form of future simple tense, the form of future simple tense. As I have written two examples there, I think it will rain soon. What I have written, I think. So whenever you are getting such a group of word there, I think, I hope, I believe, okay, and probably, perhaps, last week, last month, tomorrow, I have not written that words tomorrow, okay, tomorrow, this is also, है ना, next day, ये सारी चीजें जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपको दिखाई देंगी, then you will guess that there will be filled the future simple tense, or we call it future indefinite tense. I hope कि ये इससे रिलेटेड जो वर्ब फिलिंग का क्वेश्चन है वो आप अब रॉन्ग नहीं करोगे. So you only have to keep these adverbs, keep these verbs in your mind, keep these words in your mind, that whenever you find them, you will fill the future simple form. Okay, just move further. And now, what is future simple tense? What is the helping verb of this tense? How you will frame the sentences there? अपने को ये तो पता लगा कि whenever we will get such words, we have to fill the future simple tense. But what is future simple tense? What is the helping verb of that? Just move further and know that. Okay, what is the helping verb? हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल एंड शैल. वी ऑलवेज यूज विल और आई का जो यूज है इसको मैं बता देती हूँ. आई, ये जो शैल था ये अभी तक आई और वी के साथ में यूज होता था, एंड द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो भी होते हैं, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग विल का यूज करते हैं. One thing is that, but now this is modern English. We are using now these days with the third person, second person, इनके साथ में भी हम लोग shall का यूज कर रहे हैं. ओके, आपको पता होना चाहिए that I and we, this is the first person, ये first person है. ओके, you, this is the second person, ये second person है, ठीक है. And he, she, it and they all are comes in the category of third person. ये सारे क्या है बच्चे, थर्ड पर्सन में आते हैं. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. तो मैंने क्या कहा कि जो शैल है, शैल अभी तक आई और बी के साथ में यूज होता था, बट मॉडर्न इंग्लिश में थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ में भी शैल का यूज होने लगा है. तो हमने जाना कि हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, फ्यूचर सिंपल टेंस का, दैट इज विल और शैल. सो लेट्स मूव फर्दर. पहले फिर से हम लोग सिंपल, नेगेटिव और इंट्रो में इसके सारे स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, देन वी विल फ्रेम द सेंटेंसेस. तो सिंपल सेंटेंस के लिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रहेगा, आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, देन विल शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ओके, देन आफ्टर V1, always keep it in your mind whenever you are using such helping verbs, will or shall, it will always take the first form of verb V1, yani basic form of the verb, then object. Okay, now frame a sentence related to this tense. As I say, he will go to his home. We can do that, or we may add tomorrow. Okay, he will go to his home tomorrow. सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव से हम लोग लेते हैं. कोई भी सेंटेंस होगा आपको ये स्ट्रक्चर रखना है. सिंपल सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है, सिर्फ नेगेटिव वर्ड जो है वो ऐड होगा. सब्जेक्ट, नाउ विल शैल, then after this helping verb we will always add not, then V1, then object. Got it? Take an example for that.
as I say, Ritu will not go or work, कुछ भी लिख देते हैं. Ritu will not wash her clothes. Okay. Interrogative sentence, we can do it like this, as we always write the helping verb of any tense. So will and shall will be applied here, then after subject, then V1, then object, and it is very necessary to put a question mark at the end. Take an example for that. As I wrote, shall we write a letter to the panchayat? Okay, and put a question mark. So that was the way we know how to frame the sentences of future simple tense से related sentences को कैसे frame करना है. We know that all. Okay guys, I hope कि इस छोटे से वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा. Just I will send the same worksheet related to this sentence, related to this tense, till evening. Okay, thanks a lot for watching this video. Have a nice day to you all.